students, welcome to the computer class. Today we are going to start with chapter 7, more on Microsoft Paint part 1. In this chapter we are going to study about starting Microsoft Paint, about paint window, tools group, colors group, brushes tool, curve tool, etc. So let's begin. Using MS Paint. Children, Microsoft Paint is a program that you can use to draw colors and edit pictures. You can use pencil and crayons to draw and color a picture on a sheet of papers. Similarly, Paint program allows you to draw and color pictures on a computer. Children, Microsoft Paint provides various tools to draw beautiful pictures and creative projects. You can also insert text and a variety of shapes in your pictures. Starting Paint. Let us know, children, how to start a Microsoft Paint. This is the Start button. Click the Start button on the taskbar. The Start menu appears. It displays a list of all programs in your computer. This part is the Start menu. It displays a list of programs in your computer. Now click Windows Accessories. This is the Windows Accessories. Click on this Windows Accessories. Now select Microsoft Paint. This is the Microsoft Paint. Click on this Microsoft Paint. The Microsoft Paint window opens on the desktop like this, as shown in this figure. When you start the Paint program, the Paint window appears on the monitor as shown in the figure. Children, this is the picture of Microsoft Paint window. Children, let us know about the Paint window. The main parts of the Paint window are drawing area, second, ribbon, third, file tab, fourth, quick access toolbar. Let us know about the drawing area. The blank white area in the Paint window is the drawing area. It looks like a drawing sheet. You draw pictures in this area. Look at this picture, children. This white part is called the drawing area. It looks like a drawing sheet and you can draw pictures in this drawing area. Ribbon. Let us know about ribbon, children. The ribbon is a bar above the drawing area. It provides you various options to draw and color pictures. Look at this figure, children. This part is called the ribbon. The ribbon is just above the drawing area. पिक्चर्स को कलर करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए रिबन हमें कई ऑप्शन प्रोवाइड करता है. This is the picture of ribbon, children. The another main part of the Paint window is File tab. Children, the File tab provides option to create a new picture, open an existing picture, and you can save the current picture, etc. Look at this figure, children. This is called the File tab. By using File tab, you can create a new picture, you can open an existing picture also, and if you want to save the picture, you can save the current picture and etc. File tab की हेल्प से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कोई बनी हुई फाइल को ओपन कर सकते हैं और फाइल को सेव कर सकते हैं. The another main part of the Microsoft Paint window is Quick Access Toolbar. This part is called Quick Access Toolbar. The Quick Access Toolbar has buttons to perform common tasks such as save a file, undo or redo your last action. Children, look at this figure. This is the icon of save option. This is the icon of undo and this is the icon of redo.
सेव ऑप्शन की हेल्प से आप फाइल को सेव कर सकते हैं और रीडू ऑप्शन की हेल्प से कोई लास्ट एक्शन को आप रीडू कर सकते हैं। टूल्स ग्रुप। डू यू नो चिल्ड्रन, द टूल्स ग्रुप कंटेन्स डिफरेंट टूल्स to help you make beautiful pictures. You can select a tool by clicking on it. The some common tools are pencil tool. This is the icon of pencil tool, children. The pencil tool is used to draw freehand drawing. Pencil tool का use freehand drawing करने के लिए use किया जाता है. This is the icon of fill with color tool. The fill with color tool is used to fill parts of a picture with colors. The fill with color tool का use किसी पिक्चर के पार्ट में कलर फिल करने के लिए किया जाता है। रबर टूल। दिस इज द आइकॉन ऑफ रबर टूल चिल्ड्रन। द रबर टूल इज यूज्ड टू इरेज अ पार्ट ऑफ अ पिक्चर। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेज? ऑल ऑफ यू यूज इरेजर। रबर टूल का यूज किसी भी पिक्चर के पार्ट को इरेज करने के लिए मीन्स मिटाने के लिए किया जाता है। दिस इज द आइकॉन ऑफ टेक्स्ट टूल। द टेक्स्ट टूल इज यूज्ड टू राइट लेटर्स एंड डिजिट्स इन अ पिक्चर। पिक्चर में टेक्स्ट लिखने के लिए या डिजिट्स को लिखने के लिए द टेक्स्ट टूल का यूज किया जाता है। दिस इज द आइकॉन ऑफ मैग्नीफायर टूल। द मैग्नीफायर टूल इज यूज्ड टू व्यू a part of a picture in enlarge and reduce size. मैग्नीफायर टूल का यूज़ किसी भी पिक्चर के पार्ट को एनलार्ज करने के लिए मीन्स बड़ा करके देखने के लिए और छोटा साइज करके देखने के लिए और स्मॉल साइज मीन्स रिड्यूस साइज में देखने के लिए किया जाता है। इट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक in the next video. Till then, bye bye.